today we formally start chapter 1. This chapter is related to decimal representation of number on a machine and possible sequence of steps what you write, that is called algorithm. And then we will also talk about a new concept that is called stability. So firstly, I'm starting with decimal representation of numbers. And technically, we say that this is floating point representation. So this is called floating point representation of numbers. So what is this representation? This is just a decimal form of any number. For example, you have a number, say x equals to, let's say 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then I can also write this number 1.2345 times 10 power, कितना आएगा 2, 4. 10 power 4. Okay, or you can write it 0.12345 multiplied by 10 power 5. So more formally, we write x equals to. So what a number have? Number have a sign, that is sigma, that can be +1, that can be -1. Okay. Then m, which is called mantissa. Like here we have 1.2345. So in this number, sine sigma is +1, m is 1.2345. And also, if you are writing number on base 10, then you may have 10 power e. Okay. So what is sigma here? So sigma is sine. It can be +1 or -1. This is just a sign of the number. And then you have mantissa m, that can range from 1 to formally 9. So 1 to, that can be anything. And e, this is called exponent. What is exponent? 10 power something. Okay. Also, you can represent number in series form. For example, you have a number, let us say 8 by 3. So I can write it 2.6666, etc. Okay. So series क्या होगा? So we write this number in powers of 10. Or you can write it 0 point, it's your choice, 0.2666, etc. Multiply by 10 power 1. So, or formally you say first, it can be written as 0.2 plus 0.06, okay, plus 0.006 and so on. लिख सकते हैं ना इनको? Point add करोगे, you will get this number. And of course, you will multiply everything with 10 power 1. Series means write each place in powers of 10. So zero point 0.2 will be in power of 10 will be 2 by 10. 0.2. Then you have 0.06. That will be 6 by 100. 10 square. Then third digit, that will be 6 by 10 cube and so on. So this is called series representation of numbers. For although it is not required for computational purpose, but when you
do some mathematics for these numbers. So we need this series form. Okay. So you can write 0.266. So first 0.2 will be 2 by 10. Okay, 0.2. So writing numbers in the powers of 10, like you can say 100, what will be 100? If you want to write 100. So there are various ways to write it. You can say this is zero point 0.1 multiplied by 10 cube. Okay, and so on. So, okay, so what is first floating point representation means decimal representation of numbers. And you may have seen in MATLAB on computer that if you give input like 2 by 3, like 2 by 3 or 1 by 3, if you add manually, what you do, you take LCM, you say 3 by 3, this is 1. But computer don't treat number p by q form. When you give input 2 by 3, a machine first simplify it in decimal form, 0.666 etc., depending on the limit. So it will simplify first both, then 1 by 3 will be 0.3333, then it will add. Okay, but manually you can write number in p by q form. So now we come to general representation that uh, you have written. So some numbers are full, like you have 2, 3, 4. So this is a full number. When you give input to a computer, computer will take it as it is 2, 3, 4. But on the other hand, when we have something like that, let us say I have 1 by 3. So computer will simplify it to 0.333 and so on. Let us say you have a calculator which has limit of 4 digit. Then that calculator will write 1 by 3 as 0.333. Okay, so if you take 1 by 3, this is exact value of number. This is called exact. This is also exact value. I am writing it in dot dot dot. But when you cut a number, this is called approximation. So I can say this is nearly equals to in 4 decimal place. And usually, so in general, let's say we have a number x equals to, I'm writing it in decimal form, 0.A1, A2, AN, AN plus 1 and so on, multiply by 10 power E. Like this 0.333. So what is A1? A1 is 0.3. What is A2? 0.3. All AI, these are single digit integer. They are 333. Okay. So this is exact value. And approximation, I will denote with X star, approximation. Or we say floating point representation, or we write it FLX. So approximation will be 0.A1, A2 up to AN. If I keep first n digit. Okay. So this is approximation with n digits. तो पहला स्टेप क्या है कि अब आप इनपुट दे रहे हो जैसे 1/3, 2/3. अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 0.3333 अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिजिट 0.33. But on a machine which has a limit on digits, you cannot write infinite number of digits. So you have to cut a number at certain point. तो इसका मीनिंग है that is approximation. So you are doing approximation.
ओके। एक नंबर का और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं यूजुअली नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। सो व्हाट इज दिस फॉर्म? I write a number x equal to this point a1 a2, and approximation is denoted by this 0 a1 a2 an multiplied by 10 power e. A1 is non-zero. So usually we represent the number in this form. अब नॉर्मल फॉर्म क्या है? आपने 0 पॉइंट समथिंग लिखना है, दैट फर्स्ट डिजिट मस्ट बी नॉन जीरो। Okay. For example, you have a number, let's say 2 by 3. So what will be value in decimal form? Hmm? 0.666. Okay, so 2 by 3, exact value. This is for example. Okay. Exemplary ratio. So this is 0.6666. This is exact value. And what will be normal form? Let us say, अब कोई कहे कि मैं ये लिखना है, you can write it. Okay, you can write it. But this is not normal form. What is normal form? So you write number 0.666. So it's already normal form here. Let's take something else. Let's take some other number like 13 by 8. What will be 13 by 8? Let's say, let's take different. 1.62. So 13 by 8 is 0.62. 1.5. So what is normal form of this number? ये भी नॉर्मल ही हुआ। 0.16 into 10 raised to power minus 0.1625 To और ये 5. to पता 10 raised to power 1. Multiply by 10 power. 1. 1. 1। So this is called normal form. Although we don't need this form in later on, so just I have defined. So what we have studied and up to this point, you have a number. Okay, some numbers are full like 1, 2, 3, 4, 5. There is no problem when you give input. But some number like 8 by 3, they have decimal expansion with infinite number of digits. Okay, and you can represent number in a series in power of 10, and on a machine you have to cut a number. अब जो मैंने बोला कि कटिंग करना है आपने, so two type of cutting you can do to store a number. Like 0.333 we will cut this number, so this is called chopping and rounding. बोलेंगे तो उसको अप्रोक्सीमेशन। So two type of approximations we have: chopping and rounding. So chopping and rounding approximations. So I'm not going to write big definition, just we write it in symbolically. So we have a number 0 point say a1 a2 uh, an and so on, है ना? Infinite digit है तो that will continue. So this is exact value like 0.33333, so it will continue. Okay, 1 by 3. So this is exact value. So what we do in chopping, we just cut, and cutting depend on you, that depend on machine that you are using. So you want, let's say you want to keep 4 digit, 5 digit, 6 digit, that depend on you. So chop means just cut first. Let us say you want to cut at fifth place, so just retain first fifth digit. That is called chopping. जैसे chopper होता है ना, chopper. So you are cutting, so just cut a number. So what is chopping? These are chopping errors.
You can say these are error. Or firstly, I'm defining chopping. So what is chopping? So chopping approximation of a number is defined as approximation. So 0.a1, a2, an. Okay, so just keep n digit. And second is rounding. अब राउंडिंग में जब आप कट करोगे, when you cut at nth place, you will also see at next place. For example, you have a number like 0.12345 6. Let's say I want to cut here. Okay, तो आपने फिफ्थ पे कट किया है, so you have to see next one. If next digit is 5 or bigger, then you will add 1 here. And if this digit is like 5, 6, 7, 8, 9, you will add. And if it is 1, 2, 3, 4, you keep this 5 as it is. So how rounding is defined? So you will keep the number same, 0.a1, a2 up to an. When next digit, an plus 1, this is less than 5. And I can write both in one. So I will add 1 in this last place if next digit is bigger than or equal to 5. Okay, clear? So in rounding, you also see next digit. For example, let us take a number 6 by 7. So it will be 0.57857142 etc. 6 by 7. So this will be its approximation will be 0.85. Let's say I want to keep first two digit. Okay. So this is chopping with two digits. So this will be 0.85. But if you do rounding in two digit, so 0.85. Okay, so see next one. Next one is 7. So you would add 1 in 5. So 0.86, same rounding with two digits. Okay. And if you keep first three digit 0.857, then rounding and chopping both are same. 0.857 चॉपिंग पे तो जस्ट कट कर दोगे ना, आपने 3 पे कट करना, जस्ट कट इट 0.857. इन राउंडिंग यू विल सी नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट इज 1 less than 5, so you also keep same 0.857. ठीक है बच्चों, एनी डाउट? No, sir. ओके, सो इन टू वे टू यू कैन कट ए नंबर. अब एक कटिंग जरूरी है ना, कंप्यूटर आप इनफाइनाइट डिजिट तो स्टोर करेगा नहीं, सो यू हैव टू टेक केयर. तो सो फर्स्ट सोर्स ऑफ एरर यही है आपका. आप देखो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 1/3 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो उसके 1/3 है. 1/3 मीन्स 0.333 अप टू इनफाइनाइट डिजिट 3. दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू. बट you cannot write infinite digit on a computer, so you are cutting a number. Maybe आप 10 digit keep करो, but you are cutting. Okay, so cutting will introduce errors. तो first small question, first source of error क्या है?
that is rounding and chopping. और कई बार नंबर ऐसा होगा कि दैट यू हैव ए वेरी बिग नंबर. मान लो आपके पास कैलकुलेटर है, यू हैव ए कैलकुलेटर, उसमें 5 प्लेस की स्टोरेज है, 5. सो यू हैव 5 ब्लॉक्स इन दैट कैलकुलेटर, और नंबर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8. सो कैन यू स्टोर दिस नंबर ऑन 5th प्लेस डिवाइस? नो. तो नंबर बड़ा है ना उसमें. अब कंप्यूटर में लिमिट ही 5 डिजिट का है, आपके पास 8 डिजिट है, सो यू कैन नॉट स्टोर ए नंबर. तो इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो. ओके. सो नंबर इज टू बिग and you cannot store that number on a machine. And sometime you also have a very small number. सेम में मान लो आपके पास एक नंबर है, वो 0.00560 है, उसके बाद 1 है. And if you write this small number on this 5 digit calculator, 5 digit क्या होगा? 1 2 3 4 5 बस. So you got 0. तो एग्जैक्ट में तो नंबर 0 है नहीं, बट your machine is making it 0. ओके. तो इसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो. अंडरफ्लो मीन्स a number is too small to fit in on a device, and over means a number is very big and you cannot store that number on a computer. ठीक है. अब small number, they can be problematic if you are dividing with them. Both are problematic actually, but if you do 1 by 0 you got infinity, and then you cannot perform further calculation on a machine. Okay, so what is overflow? Overflow and underflow. So if a number, overflow means a number is too large, then overflow occurs. And on the other hand, if you have a small number, if a number is too small, then underflow occurs. अंडरफ्लो का तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरफ्लो की दिक्कत है बस. हाँ, ओवरफ्लो की, अंडरफ्लो की दिक्कत वैसे नहीं है. जैसे मैटलैब में आपके पास स्मॉल नंबर है, मैटलैब विल मेक इट 0 नाइसली, बट दे कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ यू आर डिवाइडिंग विद द स्मॉल नंबर. आप कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हो ना, इंटरमीडिएट, so if you got 1 by 0, that then in that case it can be problematic. Okay. तो अब सबसे बेस्ट वे है टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, ओवरफ्लो. अब देखो ये भी एरर है ना, तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो? हाउ यू कैन रिड्यूस? सो यूज ए मशीन which has more digits, which has capability to store more digits. अब more digit का ऑप्शन होगा, then you can store big number as well as you can store small number. Okay. बाकी आजकल कंप्यूटर स्मार्ट है, मैटलैब you won't get any problem. So these were classical problems then when computer had finite limits. So these overflow and underflow, they were problematic. Okay. So now I define uh, different kind of error that are known as absolute errors and relative error. So next definition is, although you know what is absolute error,
What is absolute error? In the same notation, I will write it EA. So it is X true value minus approximate value. And what is relative error? So relative error means absolute error divided with true value. And if you want to write relative error in percentage, then you just multiply with 100. And that is called relative error in percentage. दोबारा बता देंगे एक्स स्टार अपना क्या था? एक्स स्टार क्या है? Approximation. Just calculate. ओरिजिनल नंबर माइनस अप्रोक्सीमेशन, और निचला है ओरिजिनल नंबर माइनस अप्रोक्सीमेशन बाय उसका मॉडुलस। ठीक है, तो एरर क्या होगा? ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जी सर, समझ गया। ओके, सो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब मॉडुलस ले रहा हूं मैं, ठीक है। सो एरर साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए डिवाइस इन विच आई एम मेजरिंग द वेट मेजर कर रहा हूं। तो किसी का वेट लेटर से 50 है, तो आया कितना है? 50.2। और दूसरे का वेट भी 50 है, वो उसने बताया 49.8। अब दोनों में 0.2 एरर है, 0.2, एक में प्लस है एक में माइनस है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एरर 0 नहीं होगा। सो फर्स्ट यू टेक मॉडुलस। दोनों में एरर 0.2 है, तो टोटल एरर कितना होगा? 0.4। यानी कहने का मीनिंग है एरर प्लस हो या माइनस हो, एरर इज एरर। दैट्स व्हाई वी टेक मॉडुलस। और रिलेटिव एरर, एक मैं रिमार्क लिख रहा हूँ। सो these remarks are important for short answer type questions. Depending on current situation. Okay, so what is the remark? That relative error, they are more meaningful. Relative errors are more meaningful. Let us take one rough example. That you have, let's say you are counting maybe some currency notes. So आपके पास पैसे हैं, सो यू आर काउंटिंग, तो एरर है फर्स्ट में 10 है। 10 का एरर है, मान लो आपके पास, ठीक है, कि एक्स आपके पास 20 रुपीज है, और जो एरर आ रहा है वो 10 आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर 10 आ रहा है, ठीक है। और रिलेटिव एरर कितना आएगा? व्हाट विल बी रिलेटिव एरर? एब्सोल्यूट एरर ऊपर ये एक्स, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, एक्स माइनस एक्स स्टार। एक्स स्टार यहाँ पे 10 होगा, तो रिलेटिव एरर कितना होगा? 10 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, और आई एम राइटिंग रिलेटिव एरर इन परसेंटेज 100। सो दिस सेज 50%। और सेंस भी बनता है, 20 थे आपके पास, लेट अस से यू लॉस्ट 10 रुपीज फ्रॉम 20। सो व्हाट इज रिलेटिव एरर? 50%। बट ऑन दी, दिस इज द फर्स्ट केस। लेट्स टेक सेकंड केस। You have same absolute error 10. That's why I'm saying relative error are more meaningful than, you can say then absolute error. You can add this one, then absolute errors. अब absolute error तो दोनों में same है, 10 10, but now you have, let's say 2000 rupees and you lost 10, or you maybe you have counting difference है वो 10 का, error 10 है। अब relative error कितना होगा? कितना होगा relative error? So बताओ। 10 by 2000 divided by 100. 10 बाई Multiply by 100. मल्टीप्लाई करना, शाबाश। तो ये कितना हो गया? 1/2.5%। तो सेंस किसमें बना देखो?
So relative में. रिलेटिव में बना, देखो अब ये कह रहा है कि अब 2000 है आपके पास, 10 रुपीज गुम हो गए, कोई बात नहीं है ना, तो एरर भी कम ही आ रही है ना, 0.5% आ रहा है रिलेटिव एरर, सो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल, 0.5% है। एब्सोल्यूट दोनों में 10-10 है, बस 20 में 10 गुम हो गए तो 50%, दैट मेक सेंस। ओके, सो रिलेटिव एरर दे आर मोर मीनिंगफुल। मान लो और एग्जांपल में, मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, थापर में है ना, उधर बड़ी बिल्डिंग गेट के पास है ना, मान लो बिल्डिंग का हाइट लेट्स से 200 फीट है, आपने मेजर किया 200 फीट था, उसमें 2 फीट का एरर आ गया, 200 में 2 फीट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 फीट का एरर है। अब उसी उसी से आपकी हाइट मेजर करें, मान लो किसी की हाइट 6 फीट है, 6 फीट में 2 का एरर होगा, दैट इज दैट इज मोर, यू कैन से दैट इज ए बिग एरर। अब 6 में 2 एरर होना, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है ना। हाँ, बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, एक्स इज क्वाइट लार्ज, अब एक्स लार्ज है, तभी जो आप रिलेटिव एरर निकालते हो, इन द सेंस ऑफ एक्स निकाल रहे हो आप। सो रिलेटिव एरर दे टेक केयर ऑफ ट्रू वैल्यू, सो यू आर डिवाइडिंग विद ट्रू वैल्यू, so that make more sense. So if possible in this course, firstly we will never write this error, ये error, वैसे error तो यही है x minus x star, so इसको तो हम नहीं लिखेंगे कभी, है ना। So we will always write absolute error, and if possible we try to write relative error in percentage. Okay, और एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपस में इनमें रिलेशन भी है कि if you know relative error and x, okay, so if you know relative error and x, then you can make a guess for x star, or if you know relative error or x star, you can make a guess for x. So perhaps this is the first example of this course. This example says that find the largest interval in which the approximation x star must lie to approximate square root 2 with relative error at most 10 power minus 5. अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल, सो इट सेज दैट फाइंड अप्रोक्सीमेशन वेयर इट कैन लाई, एंड अप्रोक्सीमेट किसको कर रहे हो, अंडर टू को, सो व्हाट इज एक्स अंडर टू, एंड रिलेटिव एरर मैक्सिमम एट मोस्ट इज 10 पावर माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, एक्स गिवन है, रिलेटिव एरर मैक्सिमम गिवन है, जैसे आप कहते हो ना कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना फॉर एवरी एक्स, वैसे ही ये कह रहा है कि आप जो भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो, मेरे को मैक्सिमम एरर पता है कितना है, देन व्हाट इज एक्स स्टार। So in formal notation, I'll write x is under 2, approximation that you need to find, and relative error at most maximum 10 power minus 5. That is given. Okay. So I'm writing formula. Relative error क्या होता है, x minus x star by x less than or equals to 10 power minus 5. This is given. This is relative error. Okay, just simplify this expression. X is under 2,
x star you need to compute, and x is under 2. Under 2 is positive, so चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, ये पॉजिटिव है, ठीक है, नो नीड टू पुट ए ब्रैकेट. बट हियर यू नीड टू पुट ए ब्रैकेट, वी डोंट नो विच वन इज बिगर. ओके, सो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस पॉजिटिव नंबर है, यू कैन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स. ओके, नाउ रिमूव द मॉडुलस. लेट्स से अगर आपके पास ये हो mod x लेस देन 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 to +3 +3. तो यहाँ पे लगा दो, तो क्या होगा, -2 से लेके 2 टाइम्स 10⁻⁻5 से लेके प्लस प्लस तक, ठीक है, ये इसका प्लस माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है, मॉडुलस रिमूव करोगे जब. सो अब आपने x स्टार कंप्यूट करना है ना, तो पहले रूट 2 को गायब कर दो, इसको रूट 2 माइनस कर दो सारे तीनों में. सो सबट्रैक्ट रूट 2. सर हाँ जी, सर यहाँ पे आपने जब मॉडुलस हटाया तो ये सर क्या किया, एक बार बता दें. ये मैंने ये यूज किया है. अगर मेरे पास मॉड x लेस देन 3 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेंगी, -3 से लेके +3 तक होती है, यस सर. यही है. अब ये इसको आप x कह लो, √2 माइनस एक्स स्टार, दिस इज x, दिस इज लेस देन दिस नंबर. आप a कह लो, यहाँ पे a, तो -a से लेके +a तक होगा. यस सर. तो इसका मॉडुलस रिमूव किया मैंने, मिडिल इसका, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू -a to +a थी, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका नेगेटिव से लेके इसका पॉजिटिव तक. ओके. a हो गया आपका √2, ये मैं ये ये x है और ये a है, ठीक है. यस सर. यस सर. और x लेस देन a, सो -a से लेके +a तक, ठीक है. अब आपने x स्टार निकालना है मिडिल में, ठीक है, तो √2 माइनस कर दो पहले, तीन इनइक्वालिटी है, माइनस कर सकते हो आप ना, सब में माइनस करना है आपने. √2 टाइम्स दिस माइनस x स्टार, इधर भी माइनस हो जाएगा सब में. फिर ये तो -x स्टार था, x स्टार निकालना है, फिर क्या करें, साइन चेंज नहीं होता. इस वन से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड हाँ तो नेगेटिव, सिंपल आ जाएगा. नेगेटिव से Sign. मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे साइन भी चेंज हो हाँ जाएंगे. साइड साइन भी चेंज हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई विद -1, साइन उल्टा हो जाएगा ना, जैसे -3 लेस देन -4, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक लिखा है, उल्टा लिखना, उल्टा लिखा है सर. -4 लेस देन -3 होता है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, है ना. सो माइनस करोगे तो साइन उल्टे होंगे. सो नेगेटिव, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज बिगर, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, इसको -1 से करोगे, -2 टाइम्स 10⁻⁵. तो ये रेंज हो गया. सो दिस कंप्लीट्स. तो अब लास्ट में चाहो तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कैलकुलेटर से. सिंप्लीफाई करोगे तो ये बिगर वैल्यू है वो लगभग आ रहा है, रूट कैलकुलेटर से कर देना आप इसको, 1.414227 एंड सो ऑन. नहीं सर, जब हम वैसे ही कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते तब भी तो साइन चेंज होता है. सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं होता ना, मतलब ये है x लेस देन 3 है, दोनों साइड्स पे आप 2 माइनस कर सकते हो अच्छा ऐसे साइन, ठीक है ठीक ना, है. मतलब सेम चीज कर रहे हो ना दोनों साइड में आप, हाँ जी समझ गया. प्लस माइनस से साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो इनको कैलकुलेटर से लिख देना. लिखना ऐसे है कि देखो ऑलमोस्ट ये सेम है, √2 प्लस √2 टाइम्स, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आपने कैलकुलेटर से लिखना है अनटिल यू गेट डिफरेंट डिजिट. तो शुरू में देखोगे ये जो स्मॉलर है 1.4141, इसमें भी यही आ रहा था ना, 1.414 तक सेम आ रहा है, आगे 2-3 डिफरेंट डिजिट तक लिख दो इसको, 41994 ये आ रहा है लगभग, ठीक है.
414, तो स्मॉलेस्ट ये है, बिगेस्ट, यानी कि रेंज मिल गया आपको कि इसके और इसके बीच में रहेगा ये। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये सिचुएशन हमेशा रहेगी, आपको एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगी कोई चीज, यू विल गेट समथिंग कि ये रेंज मिलेगा या आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो यूज द बेसिक फार्मूला टू डू द कैलकुलेशंस। तो सोर्स ऑफ एरर क्या क्या आए आज तक, हमने क्या क्या पढ़े हैं सोर्स ऑफ एरर? Chopping and rounding, हाँ जी, और और ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। overflow and underflow. underflow. So two type of source of error. One is rounding chopping and another one is overflow and underflow. And इनको अगर रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हो दोनों को? How you can remove these two aspects? मशीन की नंबर ऑफ जो क्वांटिटी वो नंबर्स रीड करता है वो बढ़ा तो इंक्रीज कर दो कि आप ऐसा मशीन लो जिसमें डिजिट ज्यादा लंबा फॉर्मेट आप लिख सकते, ठीक है। सो यू कैन गेट रिड फ्रॉम, तो ये जो एरर है यू कैन गेट रिड फ्रॉम दिस एरर बाय यूजिंग मोर डिजिट्स। ओके, okay, so I'll stop now. If you have any questions and query, let me know. नो सर। Okay, then I'll stop. थैंक यू सर।